Now in the previous lecture we have started with type 5 problem where we are given a function au plus bv, that is a combination of u and v, a linear combination of u and v. A and b are some constants. Now here the popular combination that you can get is when a and b both are 1, that is you have u plus v, or when a is 1 and b is minus 1, so u minus v. Okay, so these are the two uh, commonly given combinations. Other than that you can have other combinations also. So we are given this combination, and what we need to do is we need to find the analytic function f of z, where f of z is u plus iv. Okay, so this is the question. Now here we have already seen one problem in the previous lecture. Now we will see the next problem. We have already seen the procedure, so we'll use the same procedure here. Only what is different would be the differentiation would be a bit lengthy. Okay, so because the function given here is a little bit big. Okay, let's start with this. Find the analytic function f of z equal to u plus iv if u plus v equal to e raised to 2x into x cos 2y minus y sin 2y. So this is the function that is given to us. All right. So now what was the procedure? If you remember here, whenever we are given a combination of u and v, that is au plus bv, we call that equation as 1. We differentiate it with respect to x. Then in that we put ux equal to phi 1, vx equal to phi 2, x equal to z, y equal to 0. Okay. And then whatever statement we get, we call it as 2. Then again in the same given statement 1, we differentiate it with respect to y. Using Cauchy-Riemann equations, we convert uy and vy into ux and vx, and then we make the substitution ux equal to phi 1, vx equal to phi 2, x equal to z, y equal to 0. Whatever we get, we call that as equation number 3. We solve equation 2 and 3 simultaneously to get phi 1 and phi 2. Then we use the formula f dash of z equal to phi 1 plus I phi 2. We substitute and we get f dash of z. Then we integrate it with respect to z to get f of z. Okay, so this is the entire procedure that we have already seen. So let's use this over here. Now over here, first of all, what we would do is, since there is a bracket involved, before beginning, let us just open the bracket. So we get u plus v equal to e raised to x into x cos 2y minus e raised to 2x into y sin 2y. Okay, this we will call as our equation number 1. Now what is the first thing we will do? Equation number 1, we differentiate with respect to x. Okay, so differentiating 1 with respect to x. Though we have not mentioned it, it is understood that we are differentiating 1 with respect to x partially. That means we are treating y as a constant. Okay, so let's see what we get. So here derivative of u with respect to x gives us ux plus derivative of v with respect to x gives us vx equal to, now when we are differentiating this particular term, here if you see, this e raised to 2x contains x, this x also contains x, cos 2y is a constant. So we have to differentiate the product of these two different types of functions multiplied together. We have to take its derivative. So we'll use uv rule for derivative. What does uv rule says? It says keep the first function as it is, sorry, take the derivative of the first function. Okay, any one can be the first function. So say e raised to 2x. So derivative of e raised to 2x would be e raised to 2x into derivative of 2x is 2. Okay, and this x we have kept it as it is, plus now again we consider this term. Here in for the first expression we had written down the derivative of e raised to 2x, and x has remained as it is, plus in the next expression we'll write e raised to 2x as it is into derivative of x. The derivative of x is 1. Okay, so that is the derivative of e raised to 2x into cos 2y minus, now when we come here, e raised to 2x is the only function involving x, y and sin 2y are constant.
So we'll just write the derivative of this. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x into derivative of 2x is 2, y into sine 2y as it is. Okay, so here we have got the derivative. Let's open this bracket here. Yeah, this is the UV rule we have used. So we get ux plus vx equal to, when we open the bracket, e raised to 2x into 2 into x into cos 2y gives us 2 e raised to 2x into cos 2y plus e raised to 2x into 1 into cos 2y gives us e raised to 2x cos 2y minus this we have written it as 2 e raised to 2x y sin 2y. Okay, so we have got the statement after differentiating 1 with respect to x. So after differentiating with respect to x, what is the next step? What is the next step after differentiating with respect to x? Substitution. Very good. We are making 4 substitutions here in the same step, right? Let's write down the substitution. We are going to put ux equal to phi 1, vx equal to phi 2, x equal to z, and y equal to 0. Let's do that. So ux we have put it as phi 1 plus vx is phi 2 equal to 2 e raised to 2z into cos 2 into 0 plus e raised to 2 into z into cos 2 0 minus 2 into e raised to 2z into 0 into sin 2 0. So here we have just made the substitution. Let's simplify this statement. Here we'll get phi 1 plus phi 2 on the left hand side equal to. Now here if you see, cos of 2 into 0 is cos 0 and cos 0 is 1. So 2 e raised to 2z into 1 gives us 2 e raised to 2z into z plus here again cos of 2 into 0 is cos 0 which is 1. So e raised to 2z into 1 is e raised to 2z. Here we are multiplying with 0, so this entire term becomes 0. So this is the expression for phi 1 plus phi 2. We call this as statement number 2. Okay, now this is the first thing. What is the next thing we would do? What we have done so far? क्वेश्चन में जो दिया है ब्रैकेट ओपन करके वी हैव कॉल्ड दैट एज स्टेटमेंट नंबर 1. स्टेटमेंट नंबर 1 को वी हैव डिफरेंशिएटेड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x and then in that we have put ux equal to phi 1, vx equal to phi 2, x equal to z and y equal to 0. Okay, these are the two things we have done. Okay, what is the next step? Differentiate 1 with respect to y. Differentiate with respect to y. Very good. Excellent. Yes. So let's take this equation number 1 again. This is our u plus v. And now we will differentiate this 1 with respect to y. So let's see what we get. Derivative of u with respect to y is uy plus derivative of v with respect to y is vy equal to. Now if you look at this particular expression, this term, e raised to 2x into x, this do not contain y, so they will remain as it is. Only cos 2y will undergo differentiation. Derivative of cos 2y is minus sin 2y into derivative of 2y is 2. Okay, minus, when we come here, e raised to 2x does not contain y, so it remains as it is. Now here y into sine 2y, two different functions in y multiplied together, we have to differentiate, so we have to use product rule or u into v rule. So according to u into v rule, so what we have done here is, first we have differentiated y, so y ka derivative is 1, sine 2y remains as it is, प्लस नेक्स्ट इसके लिए y remains as it is into derivative of cos 2y. So derivative of sin 2y is cos 2y into derivative of 2y is 2. Okay, so this is what we get. Let's open the bracket and write it properly. So we get uy plus vy equal to, when you open this bracket we get e raised to 2x into minus sin 2y into 2 is minus 2 e raised to 2x x sin 2y
minus e raised to 2x into 1 into sine 2y gives us minus e raised to 2x into sine 2y minus e raised to 2x into plus y into cos 2y into 2 gives us minus into plus is minus 2 e raised to 2x y into cos 2y. Okay, so this is the statement we have got after differentiating this with respect to y. What to do next? Very good, Amit. Cauchy-Riemann equation. Why did we not do the substitution here directly? यूजुअली डिफरेंशिएशन के बाद सब्सटीट्यूशन होता है ना, तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं दिया? Vx नहीं, Vy चाहिए. Very good. We want Ux and Vx. Excellent. So we use Cauchy-Riemann equations. Yes, Ux and Vx are required. Excellent. By Cauchy-Riemann equations, Ux equal to Vy and Uy equal to minus Vx. अब ये इसमें हमने substitute किया, तो Uy is minus Vx, Vy is Ux. Okay, so plus Vx equal to, this right hand side remains the same. Minus 2 e raised to 2x into sine 2y minus e raised to 2x into sine 2y minus 2 into e raised to 2x into y into cos 2y. ओके, अब इसको सिर्फ हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि ux वाला टर्म पहले लिखे, vx वाला टर्म बाद में लिखे. नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट एक कन्वीनियंट हो जाता है अपने आगे के कैलकुलेशन के लिए. So here, since this is plus ux, we have written ux minus vx equal to minus 2 e raised to 2x into sine 2y minus e raised to 2x into sine 2y minus 2 into e raised to 2x y into cos 2y. Okay, we got ux minus vx, we got x and y here. Now we will make a substitution. What is the substitution? Ux equal to phi 1, vx equal to phi 2, x equal to z and y equal to 0. So what do we get? Ux के जगह पे phi 1 minus Vx is phi 2 equal to minus 2 into e raised to 2z into sine of 2 into 0 minus e raised to 2z into sine 2 into 0 minus 2 into e raised to 2z into 0 into cos 2 into 0. तो यहाँ पर हमने सिर्फ सब्सटीट्यूशन किया है. Now let's simplify it. So we'll get phi 1 minus phi 2. Now if you look at this first term, साइन ऑफ 2 into 0 is sin 0 and sin 0 is 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. यहाँ पर फिर से साइन ऑफ 2 into 0 is sin 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया. यहाँ पर देखो ये 0 से मल्टीप्लाई किया है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया. सो राइट हैंड साइड इज 0. वी गेट phi 1 minus phi 2 is equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं phi 1 equal to phi 2. We call this as equation number 3. Okay. So we got equation number 2 in phi 1 and phi 2. We got equation number 3 in phi 1 and phi 2. Let's simplify them. यहाँ पर simplification बहुत easy हो जाएगा. Okay, simultaneous मतलब since we have got phi 1 equal to phi 2, we can simply substitute this equation number 3 in equation number 2. So put phi 1 equal to phi 2 in equation 2. तो अपना equation 2 है phi 1 plus phi 2 equal to 2 e raised to 2z into z plus e raised to 2z. ये अपना equation number 2 है. ये equation number 2 में हम क्या substitute कर रहे हैं? phi 1 equal to phi 2. तो phi 1 के जगह पे phi 2 डाला तो we get phi 2 plus phi 2 equal to 2 e raised to 2z into z plus e raised to 2z. Okay, let's simplify this. Phi 1 plus phi 2 plus phi 2 gives us 2 phi 2 equal to 2 e raised to 2z into z plus e raised to 2z. Now from this we get phi 2 equal to 2 e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2. So we got the expression for phi 2. Okay. इसको separately divide किया तो here when you divide this 2 e raised to 2z into z upon 2, the 2 will get cancelled.
we get e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2 remains as it is. So we have got phi 2. How to get phi 1? Phi 1 we have seen is same as phi 2. That is what equation number 3 said. Phi 1 equals to phi 2. So phi 1 will be equal to phi 2, which is e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2. Okay. So 2 और 3 को simultaneously solve करके we have got phi 1 and phi 2. Now what shall we do with this phi 1 and phi 2? F of z. What is the formula for f of z? Derivative. Sorry, Amol, that is f dash of z. Okay. What is the formula for f dash of z? Amit is saying derivative. What derivative, Amit? Utkarsha is saying f dash of z. Amit is saying phi 1 plus I phi 2. Excellent. Okay, so we'll use the formula f dash of z equal to phi 1 plus I phi 2. We have got phi 1 here. We have got here we have got phi 1, here we have got phi 2, we substitute that. So we get f dash of z equal to e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2 plus I times e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2. Okay, यहाँ पर अब ये इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. As you can see, we can take e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2. ये पूरा का पूरा ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो क्या बचा? 1 plus I. So this is our f dash of z we have got. हमें क्या फाइंड आउट करना है? f of z. हम कहां तक पहुंचे? f dash of z तक. Now from this, how to get f of z? Integrate. Okay. Integrate with respect to which variable? Z. Excellent. Okay. So f of z will be integral of f dash of z with respect to z. So let's substitute this f dash of z here. So we get f of z equal to integral of e raised to 2z into z plus e raised to 2z upon 2 into 1 plus I dz. Okay. Now we have to perform this integration. अब यहाँ पर ये 1 plus I जो है ये constant है. Okay, so we can take it outside the integral. So f of z will be 1 plus I into integral of e raised to 2z into z dz plus here this half is a constant, so we take it out of the second term ka integral. So we get plus half into integral of e raised to 2z into dz. Now we have to perform two integration here. ये पहला वाला integration कैसे perform करेंगे? It is integral of e raised to 2z into z dz. तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे? UV rule. Very good, very good. Liate. What will be our u over here? अपना u क्या रहेगा? Z. Excellent. And v will be e raised to 2z. How shall we perform the second integral? फर्स्ट इंटीग्रल का तो क्लियर हो गया. सेकेंड इंटीग्रल कैसे परफॉर्म करेंगे? That is integral of e raised to 2z direct. Very good. It is a direct formula. Okay. So this is our u, liate as you have mentioned, u, v. Okay. So let's see this integral now. So f of z equal to ये 1 plus I will remain as it is. अब इसके इंटीग्रेशन में फर्स्ट टर्म में u that is z will remain as it is into integral of v that is e raised to 2z का इंटीग्रल है e raised to 2z upon 2 माइनस ये फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो z का डेरिवेटिव है 1 इनटू सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो e रेस टू 2z का इंटीग्रल है e रेस टू 2z अपॉन 2
तो ये अपॉन 2 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड वी गेट e रेज टू 2z अपॉन 4. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, तो ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा. बाय द वे वी ऑलरेडी नो ये कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पर खत्म होता है, बट आई हैव जस्ट शोन दैट टर्म ओवर हियर. तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और e रेज टू 2z अपॉन 4 का इंटीग्रल आता है e रेज टू 2z अपॉन 8. इसका इंटीग्रल यहीं पे स्टॉप हो गया. प्लस हाफ e रेज टू 2z का इंटीग्रल है e रेज टू 2z अपॉन 2. Since we have performed this integration without any limits, a constant of integration यहाँ पर add करना है, which is c. Now since this integration is with respect to z, that is a complex variable, ये जो अपना constant of integration है ये भी complex constant रहेगा. Okay, हमने कहीं पे mention नहीं किया है, ये सिर्फ आपको समझना है. Alright, now let's simplify this and write it properly. So we get f of z equal to 1 plus I into z e raised to 2z upon 2 minus e raised to 2z upon 4. This becomes 0 plus e raised to 2z upon 4 plus c. अब यहाँ पर क्या simplification हो रहा है? What simplification is possible here? Cancel. Excellent, Amit, Disha, Amol. Very good. Why every time only एक list of 4 to 5 students are there? Okay, तो ये इनका ही सिर्फ आंसर क्या क्यों आता है? What about the other students? Other students are not understanding this. I get the same names: Amit, Amol, Disha, Utkarsha, Aditi. These are the few common names I get always. Okay, so this minus e raised to 2z upon 4 and plus e raised to 2z upon 4 gets cancelled, and we are left with 1 plus I into z e raised to 2z upon 2 plus c. So this is our f of z. Did we understand this procedure? ओके, वेरी गुड. तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है. दिस प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. ये 8 मार्क्स का प्रॉब्लम है. ओके, यहाँ पर सिर्फ each step if you see is very lengthy, so you have to just remember the procedure and keep solving it step by step. Procedure is not at all difficult. 1 minute. Hello. Good morning, ma'am. Ma'am, tomorrow no names. आई डोंट. नहीं मैम, एक्चुअली फर्स्ट ईयर जो है ना अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है ना, तो मैं एक बार प्रिंसिपल सर से पूछ लेती हूँ, एंड इफ देर इज एनीथिंग आई विल डू दैट मैम. हाँ, ओके मैम. हाँ, वेलकम, बाय. या, हेलो. या, so the procedure, as I said, is very simple. Remember, easy to remember the steps. Okay, but each step में ये जो derivative है और फिर ये substitution and all is very simple. So only each step looks very lengthy. So just be very careful while solving from one step to another step, and it will go on smoothly. Okay, so I hope we have understood this type of problem where we were given a function u plus a into u plus b into v. दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन दिया था हमें, और हमें क्या फाइंड आउट करना था? द एनालिटिक फंक्शन दैट इज f of z. ओके, इसका प्रोसीजर हमने देखा है. ओके, सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, now we will move on to the next type of problem. Okay, so I will upload the problems for practice of this particular type. You can practice more problems and then to practice it, and then if you have any difficulty you can ask. Okay, let's move on to the next type of problem. Now the next type of problem is related to the concept of harmonic function.
The harmonic function is something which we have already defined before. Okay, when we were seeing the type of problem on harmonic conjugate, so it is already defined. Let me see if anyone remembers what is an harmonic function. So what is harmonic function? Yeah, satisfies Laplace equation. Yeah, correct. It satisfies Laplace equation. Very good. What is Laplace equation? A real function is harmonic. Very good, Jeet. So first point he has already said कि harmonic function जो होता है सबसे पहले वो real function होता है, वो complex function नहीं होता है, वो real function होता है. Okay, all right, and it satisfies Laplace equation. So what is Laplace equation? A real function phi is said to be harmonic if it satisfies the Laplace equation. Yes, Ritesh has given the answer. Phi xx plus phi yy equal to 0. Very good. See, I have written the same thing over here. Phi xx plus phi yy equal to 0. ये जो है ये Laplace equation कौन से फॉर्म में हुआ? This is Laplace equation in which form? हमारे पास कितने फॉर्म्स है? When we are talking about complex function, दो फॉर्म है. Correct. Which are those two forms? Cartesian and polar. Correct. अब ये जो है Laplace equation, this is in which form? Cartesian form, because x and y variables are involved. तो polar form में अगर दिया है function, तो it will be again harmonic if it satisfies Laplace equation. So what is Laplace equation in the polar form? Does anyone remember? Phi r plus phi r upon r plus phi theta theta equal to 0. अमित लास्ट टर्म में एक गड़बड़ हो गया आपका. Phi r plus phi r upon r plus phi theta theta upon r square. Very good. Okay. Upon r square रह गया. Okay. So that is harmonic, Laplace equation in the polar form. अब ये जो polar form का Laplace equation है, इसको याद रखना थोड़ा difficult है. तो इसको मैं I'll tell you one way, a tip for remembering this. Okay. हार्मोनिक फंक्शन में लप्लास इक्वेशन है. लप्लास इक्वेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसका ये जो नोटेशन है, इफ यू सी इसमें सबस्क्रिप्ट में, इफ यू सी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब द वेरिएबल्स आर कमिंग ट्वाइस. ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 दो तीन टर्म्स है. नाउ लेट अस सी हाउ टू रिमेंबर द थ्री टर्म्स. in polar form r is a very dominant variable, तो r has to be everywhere. ओके, सो जब ये डेरिवेटिव आता है तो ये वाला एक्सप्रेशन में देखो फाई का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फाई का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, थीटा का सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. ओके, तो तीन टर्म्स में एक फाई आर रहेगा, एक फाई आर आर रहेगा और एक फाई थीटा थीटा रहेगा. फाई थीटा नहीं है. ओके, दीज आर द थ्री टर्म्स. नाउ दीज थ्री टर्म्स आर एडेड. तीनों का बीच में साइन जो है वो प्लस है. ओके, in each term r has to be seen twice. दो बार r दिखना चाहिए. ये पहले वाले में r दो बार दिख रहा है, so it is simply phi r r. यहाँ पर phi r एक ही बार r दिख रहा है, इसलिए हम अपॉन r दूसरी बार डिवाइड करेंगे. phi थीटा थीटा यहाँ पर एक भी बार r नहीं दिख रहा है, so we डिवाइड बाय
r square. ओके, सो phi theta theta अपॉन r square इक्वल टू 0. तो कभी कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाओ, तो ये याद रखना, पोलर फॉर्म में लैप्लास इक्वेशन मतलब 3 टर्म्स आएंगे, phi r रहेगा, phi r r रहेगा, phi theta theta रहेगा. ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे, phi r वाले टर्म में r से डिवाइड करेंगे क्योंकि r 2 बार दिखना है. phi r r में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि r ऑलरेडी 2 बार दिख रहा है. phi theta theta में r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 बार r दिखना है. ओके, so this is how we can remember this Laplace equation in the polar form. Okay, now the next type of problem we are going to see is type 6, where we'll be given some real function. तो ये real function हमें कौन सा function दिया जाएगा? It could be any function phi. Okay, इसका नाम कभी कभी चेंज भी होता है, f देते हैं, g देते हैं. They can give any function in the question, या फिर कभी कभी रियल पार्ट दे देते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो रियल पार्ट है u, that is a real function. Okay, then we could be given the imaginary part of a complex function, so that is v. So phi दिया जाएगा, u दिया जाएगा या फिर v दिया जाएगा. What we need to do is we have to show that the function is harmonic. तो function is harmonic कैसे show करना है? तो हमें show करना है कि it satisfies Laplace equation. ओके, और Laplace equation satisfy करना है, ये show करने के लिए हमें जो function दिया है उसका second order derivative चाहिए. All right, with respect to x, with respect to y. Okay, let us look at this particular problem. Show that the function v equal to e raised to x into x sin y plus y cos y is harmonic. तो हार्मोनिक मतलब कौन याद आता है? लैप्लास इक्वेशन. ओके, तो ये फंक्शन हमें v दिया है. टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमें मिलेगा v इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन वाई प्लस e raised to x into y cos y. So now this is the simplified form of the function. Okay, so we have to show that v satisfies Laplace equation. So for that we need second order derivative of v with respect to x, of course partial derivative, and second order derivative of v with respect to y, that is partial derivative. So let's begin. First we'll take the first order derivative of v with respect to x. तो ये फर्स्ट वाले टर्म में से कौन डिफरेंशिएट होगा? e रेस टू x इंटू एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो ये दोनों डिफरेंशिएट होंगे. तो वील हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, दे मल्टीप्लाइड, सी प्रोडक्ट रूल या फिर यूवी रूल बोलते हैं जिसको. और यहाँ से e रेस टू x मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है. तो लेट्स सी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x. सो vx इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट इसमें e रेस टू x का डेरिवेटिव लिखा e रेस टू x इंटू x एज इट इज, प्लस सेकेंड इसमें e रेस टू x एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव इज 1. okay, so this is the derivative of e raised to x into x, and sin y remains as it is, plus second इसमें e raised to x का derivative is e raised to x and y cos y as it is. Okay, so we have used this product rule. Derivative with respect to x of u into v is derivative of u with respect to x into v as it is, plus second इसमें u as it is into derivative of v with respect to x. Let's open this bracket for simplification. Okay, so here vx would be equal to, now e raised to x into sin y, that is e raised to x into x sin y, plus e raised to x into 1 into sin y is e raised to x into sin y, plus e raised to x into y cos y. So this is what we have got. We have got vx. अब ये vx को क्या करना है? Someone's microphone is on. Please keep it in mute. You can put it on when you have any questions or any doubts to ask. Yes, Amit. Again, differentiate with respect to which variable? X. Very good. तो इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर कौन कौन डिफरेंशिएट होगा देखते हैं. ये पहले वाले में e रेस टू x इंटू एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो यूवी रूल, साइन y विल रिमेन एज इट इज. यहाँ पर e रेस टू x डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर भी e रेस टू x डिफरेंशिएट होगा. सो लेट्स सी द डेरिवेटिव. vx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी vxx. दिस इज इक्वल टू,
नाउ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स इंटू एक्स एज इट इज प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1 मल्टीप्लाइड विद द साइन वाई प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स into y cos y. Okay, so this is the derivative. Let's open the brackets here now. So when we open the bracket, we get vxx equal to e raised to x into sin y plus e raised to x into 1 into sin y is e raised to x sin y plus e raised to x sin y plus e raised to x y cos y. ये वाले स्टेप में कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है? ऐड, वेरी गुड. ये बीच के दो टर्म सिमिलर है, साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे. तो व्हाट डू वी गेट? वी एक्स एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन वाई प्लस दिस विल गिव अस 2 ई रेस टू एक्स साइन वाई प्लस ई रेस टू एक्स वाई कॉस वाई. ओके, तो हमें एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, दैट इज वी एक्स एक्स. ओके, नेक्स्ट क्या करना है? वी एक्स एक्स मिल गया, वी वाई वाई फाइंड आउट करना है. करेक्ट. नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये वी को लिया है, इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो विच आर द टर्म्स विच विल गेट डिफ्रेंशिएटेड? यहाँ पर साइन वाई विल गेट डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पर वाई इंटू कॉस वाई विल गेट डिफ्रेंशिएटेड. ओके, लेट्स डिफ्रेंशिएट. तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज वी वाई इक्वल टू e रेस टू x इंटू x विल रिमेन एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव cos y प्लस हियर e रेस टू x विल रिमेन एज इट इज. अब y इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? यूवी रूल से फाइंड आउट करना है. तो y का डेरिवेटिव आया 1 cos y एज इट इज प्लस y एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव है माइनस sin y. Okay, so we have written down the derivative. Now let's open the bracket. So here UV rule we have used, that I have already explained. Okay, so Vy will be e raised to x into x cos y plus e raised to x into 1 into cos y is e raised to x cos y plus e raised to x into y into minus sin y, that is minus e raised to x into y sin y. Okay, so this is Vy. All right. ओके, अभी इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है. नेक्स्ट क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. वेरी गुड अमित. ओके, तो अब यहाँ पर कौन डिफरेंशिएट होगा? यहाँ पर ये cos y डिफरेंशिएट होगा और ये यहाँ पर ये cos y डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर y इंटू साइन वाई डिफरेंशिएट होगा. तो लेट्स सी द डेरिवेटिव. vy को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, अगेन we get vyy equal to e raised to x into x remains as it is, cos y का डेरिवेटिव है माइनस साइन y प्लस e raised to x remains as it is, cos y का डेरिवेटिव है माइनस साइन y माइनस e raised to x as it is, y into sin y का डेरिवेटिव. 1 minute. Hello ma'am, I am not in college today. Ma'am, yeah, and I'm in a lecture now. Till 10:45 I have a lecture. Can I call him back after the lecture? Okay, ma'am. After the lecture, na? Yes, ma'am. Yeah. Okay, sorry. Let's continue with that. So minus e raised to x as it is and y into sin y का डेरिवेटिव यूजिंग यूवी रूल. तो फर्स्ट y का डेरिवेटिव है 1 sin y एज इट इज प्लस y एज इट इज, sin y का डेरिवेटिव आएगा cos y. ओके, सो वी हैव रिटन डाउन द डेरिवेटिव. अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो विल ओपन द ब्रैकेट. vy will be equal to e raised to x into minus sin y, that is minus e raised to x into x sin y plus e raised to x into minus sin y is minus e raised to x sin y
minus e raised to x into 1 into sin y is minus e raised to x sin y, minus e raised to x into plus y cos y will be minus e raised to x into y cos y. ओके, यहाँ पर अगेन ये दो टर्म्स अगर आप देखोगे तो सेम है, साइन भी सेम है, तो दीज टू विल गेट एडेड. So we get vyy equal to minus e raised to x into x sin y minus e raised to x sin y minus e raised to x sin y gives us minus 2 e raised to x sin y minus e raised to x into y cos y. तो ये हो गया हमारा वी वाई वाई. तो हमें क्या मिला है, ये हमने वी एक्स एक्स फाइंड आउट किया है और ये हमने वी वाई वाई फाइंड आउट किया है. व्हाट टू डू विद दिस वी एक्स एक्स एंड वी वाई वाई नाउ? Add. Excellent. That is what is Laplace equation. Laplace equation क्या था? Vxx plus Vyy equal to 0. So we consider the left hand side of Laplace equation Vxx plus Vyy. उसमें हमने ये अपना Vxx और ये अपना Vyy सब्सटीट्यूट किया. So we get this is equal to e raised to x into x sin y plus 2 e raised to x sin y plus e raised to x into y cos y plus minus of e raised to x into x sin y minus of 2 e raised to x into sin y minus of e raised to x y cos y. We open the bracket, we get e raised to x x sin y plus 2 e raised to x sin y plus e raised to x into y cos y minus e raised to x into x sin y minus 2 e raised to x into sin y minus e raised to x into y into cos y. ओके, यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है. 0, देखो सब कैंसिल हो रहा है. e raised to x into x sin y will get cancelled with this minus e raised to x into x sin y. 2 e raised to x sin y will get cancelled with minus 2 e raised to x sin y. E raised to x y cos y will get cancelled with minus e raised to x cos y. E raised to x into y cos y. And we get the answer as 0, and that is the required right hand side. Hence, we can say Laplace equation is satisfied. And if Laplace equation is satisfied, that means the function is harmonic. Did we understand how to show that the function is harmonic? Problem is very easy. सिर्फ derivatives find out करना है, which we have to be very very careful. Okay. All right. Very good. Now that was one problem in Cartesian form. अभी same चीज एक problem हम polar form में देखते हैं. Let's look at this problem. Show that the function phi equal to r plus a upon r into cos theta is harmonic. Okay, तो ये वाला हम problem देखते हैं. तो here the function name हमें जो दिया है वो phi है. So phi equal to r plus a upon r into cos theta. First of all, let's open the bracket. So we get phi equal to r cos theta plus a into 1 upon r cos theta. All right. Okay, we have to show phi is harmonic. तो इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू आर करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू आर विल बी, यहाँ पर अगर आपने देखा तो सिर्फ आर है, तो आर का डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज प्लस ए इज अ कांस्टेंट. 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा एज इट इज. ओके, इसको ठीक से लिखा तो वी गेट phi r इक्वल टू cos थीटा. दिस विल गिव अस माइनस a इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू cos थीटा. तो ये हमारा phi r हो गया. अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर. तो phi r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r होगा phi r r. यहाँ पर कोई r का टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r विल बी 0 माइनस a एज इट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस 2 अपॉन आर क्यूब cos थीटा एज इट इज. ओके, तो ये 1 अपॉन आर रेस टू एन का हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा था. इट इज माइनस एन अपॉन आर रेस टू एन प्लस 1. ओके, तो 1 अपॉन आर मतलब 1 अपॉन आर रेस टू 1 होता है. तो यहाँ पर देखो ये 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर. 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2 अपॉन आर क्यूब. इट इज माइनस ऑफ दिस पावर अपॉन आर का फिर पावर बढ़ाना है. ओके, व्हाट डू यू थिंक विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब? 1 अपॉन आर क्यूब. इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर?
what will be the derivative of 1 upon r cube? Amit is saying minus 3 upon r raised to 4. Very good. Chirag, correct. Minus 3 upon r raised to 4. Yes. Okay. What will be the derivative of 1 upon r raised to 15 with respect to r? 1 upon r raised to 15 का डेरिवेटिव क्या होगा with respect to r? minus 15 upon r raised to 16. Okay, so you understood the concept. चलो यही डेरिवेटिव लिखा है. Yes, correct. Yes. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट 5rr इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस 2 गिव्स अस 2a इंटू 1 अपॉन r क्यूब cos थीटा. तो ये हमारा 5rr हो गया. ओके, नेक्स्ट वी टेक दिस 5, दैट इज दिस वाला ब्रैकेट ओपन वाला. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 5 थीटा इक्वल टू r एज इट इज. cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा प्लस a इंटू 1 अपॉन r एज इट इज. cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा. इसको ठीक से लिखेंगे तो वी गेट 5 थीटा इक्वल टू माइनस r साइन थीटा माइनस a इंटू 1 अपॉन r साइन थीटा. ओके, let's differentiate this again with respect to theta. So we get 5 theta theta. Yeah, Dheeraj, minus you had forgotten. Yeah, no problem. So 5 theta theta will be, now this minus r remains as it is. Sin theta का derivative है cos theta minus a into 1 upon r as it is, and sin theta का derivative है cos theta. So we have got 5rr, we have got 5 theta theta. Okay. So इन दोनों को अब किस में यूज करना है? Laplace equation in the polar form, which is 5rr plus 5r upon r plus 5 theta theta upon r square equal to 0. ये हमें शो करना है. तो first we'll take the left hand side of our Laplace equation in the polar form, that is 5rr plus 5r upon r plus 5 theta theta upon r square. Okay, let's substitute 5rr, 5r and 5 theta theta here. So 5rr was 2a into 1 upon r cube into cos theta plus 5r is cos theta minus a into 1 upon r square cos theta upon r plus 5 theta theta is minus r cos theta minus a into 1 upon r cos theta upon r square. So this is what we have got. Now we need to simplify this. यहाँ पे let's divide it separately. तो ये मिलेगा 2a into 1 upon r cube cos theta plus cos theta upon r we got here minus a into 1 upon r square cos theta upon r will give us minus a into 1 upon r cube cos theta plus minus r cos theta upon r square. Here one of the r will get cancelled and we get minus cos theta upon r minus a into 1 upon r cos theta upon r square will give us minus a into 1 upon r cube cos theta. Now let's see what simplification can be done here. Now here if you see 2a into 1 upon r cube cos theta minus a into 1 upon r cube cos theta will give us a into 1 upon r cube cos theta. With this minus a into 1 upon r cube cos theta, it gives us 0, cancel हो जाता है. Plus cos theta upon r and minus cos theta upon r cancel हो जाता है. So we get this answer as 0, which is the required right hand side. Okay, so this shows that Laplace equation is satisfied, that is this function phi satisfies Laplace equation and hence phi is harmonic. Did we understand this? Okay, do we have any doubt here? Any questions you would like to ask? No doubts. Okay. Now there is okay, the next concept is there, but I think today we have already seen two types of problems. So this concept I'll be taking it up in the next lecture. Okay, so as far as today's lecture is there, I think we'll stop here. Otherwise, three types of problems in the same lecture. One small type of problem is there, but still that we will take it up in the next lecture. Okay, so till then what we will do is